called Innovative Libraries. You will know more about yourself as an innovator. What are your strengths? And you're going to define, you may or may not, we'll see if we have time, talk about how to make your center more open to innovation. तो इस मॉड्यूल के से हम क्या सीखेंगे? Sorry. इस मॉड्यूल से हम 3 ग्लोबल ट्रेंड सीखेंगे. ग्लोबल एज इन जो वर्ल्ड वाइड यूज हो, जो पूरे देश पर, हर देश भर में यूज होते हैं. एक नई इनोवेटिव ट्रेंड्स सीखेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानेंगे और हम अपनी लाइब्रेरी कैसे लोगों को और ओपन कर सके उसके बारे में जानेंगे. Okay, so we're going to start off with another icebreaker, like I warned you we would do. So for this one, it's going to be a competition, and your teammates are all at your table here. And we want to see how innovative you are at creating a paper airplane. Has anybody created a paper airplane before? No? Well, luckily, sorry. In your workbooks, on page 7, we've got some instructions for folding a typical American paper airplane. But you don't have to follow these rules at all. So basically, we want you to create anything that flies, that looks like an airplane, and cannot be a crumpled piece of paper in a ball. And the competition is you are going to have to work as a team to create these airplanes, and you're all going to try to hit this target. आई थिंक लोगों को समझ आ ही गया है, बट फिर भी आप लोगों को पेपर प्लेन बनाना है और बहुत परफेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है, बट ये है कि वो बॉल भी नहीं होना चाहिए, कोई एक एरोप्लेन हो. अगर किसी को नहीं बनाना आता तो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हो और फिर आपको प्लेन बना के टारगेट करना है, उस पे फोकस बनाना है. पेपर से आता है. नहीं, एक ग्रुप को एक ही बनाना है, एक ग्रुप को एक ही बनाना है. We're going to give you 5 minutes in your groups to think of a strategy to create these airplanes. You can use whatever strategy you want. You can have one person creating all the planes. You can work as a team. It's up to you. टीम मिल के बनाना चाहे, अगर एक बंदे को आता है, एक बंदा बनाना चाहे, आप लोगों की मर्जी. At the end of 5 minutes, every team will have 5 tries to try to hit the target. 5 बार ट्राई करने को मिलेगा आपको. And whichever team hits the target the most wins. और जो जिसका टारगेट लगेगा जीत जाएगा. Any questions? So the ants have 5 tries to try to hit this target. You can use whatever strategy you want to. So let's go. Try number 1. You have to stand behind this line too. So who wants to go first? इधर देखो. I don't know if I do. ये ना ये ना. Oh, Talia, clap. right. Okay, so you've tried 1. Number 2. Oh. Number 3. Whoa, close. Number 4. Did that see? No. And last try. No pressure. Zero. Good job, ants. Good effort. Try number 1. Whoa, 1 point. Oh, so close. So you know, but it counts anywhere on the target. We count. Yeah. Oh, I didn't see it. Okay, so you guys have 1 point. So if I were you, I'd use this paper airplane. और पाऊंगे रखे. Oh, so 1 out of 3. 2 more tries. No. Last 1 try. more try. Oh, One try. Clap. So far the cats are winning with 1 point. All right, let's do the horses. Oh. Number 2. No. Really close. 3. Did that hit? No. No. Out. 4. Yeah. 1 point. Ma'am, excuse me,
मैम ये देखना है मतलब किस कौन सी उसकी है आंस की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इससे क्या हो गया? Hey, that's not a good start. नो नो, उसने चलाया इसने। Get some rules. And number 5. Oh, so close. So close. So 1 point. the cats and the horses are both tied with 1 point. No, so close. 2. Three. And 4. All right. Now, no pressure, but if you hit the target this time, you win. Oh, so close. Do you think we have time for a tiebreaker or not? I think they do. Okay, so I think that we need to do a tiebreaker between the cats and the horses and the But cheetahs. they just get one. So you just get, they just get one turn. One turn. One try to hit the target, one throw. Okay, and the cheetahs, are you for the cheetahs? All right. Oh, close. Oh. All right, if you get this, you win. Okay, everybody wins. Everybody wins. The point of this activity wasn't just the competition, but we wanted you to start thinking innovatively, right? Trying new ideas. And one thing that I noticed for all of you is that you tried to make the airplane a lot of different ideas, a lot of different ways, and if you failed, you just tried a different way. So इस जो एक्टिविटी से हम मेन उसका मकसद ये था कि आप कुछ भी करें उसके लिए और नए आइडियाज से सोचें। आपने कोशिश की टारगेट पर नहीं हुआ, पर आपने और नए उसको वे से मारने की कोशिश करी। तो ऐसे ही आप जब काम करें तो नए आइडियाज के साथ करें। And a big part of innovation is failing and trying new ideas when something doesn't work. और बहुत ज़रूरी है कि जब हम फेल होते हैं तो हम उससे मतलब ये सोचने को जाए कि अब हम फेल हो गए हैं, हम और नए आइडियाज के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। So you all did a great job. Give yourselves a round of applause. So remember this morning we talked about problem solving. Now we got our problem number 2. तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है। एक प्रॉब्लम हमने मॉड्यूल 1 में सॉल्व करी थी, तो ये हमारी प्रॉब्लम 2 है। The library users stand in line every morning waiting for the library to open. And while they're standing in line, they're eating food and they leave their trash on the ground behind them. We need to stop them from doing this. तो प्रॉब्लम ये है कि लाइब्रेरी के जो यूजर्स हैं सुबह सुबह लाइन में खड़े हो जाते हैं आपकी लाइब्रेरी के खुलने से पहले, और जब तक वो लाइन में खड़े रहते हैं वो खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, और जो भी उसका रैपर है वो आसपास फेंक देते हैं। अब हमको उनको मना करना है, तो हम कैसे करेंगे? उनको ये करने से रोकना है, कैसे करेंगे? So what is the problem? Let's define the problem. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेन मुद्दा क्या है? The problem is she's saying that when people come, they leave the trash everywhere, and instead of putting them in the dustbins. Okay, so people leave trash, do not use garbage. Yeah. Do not use garbage. Okay, what's the other problem? इसमें मैम हम उनको ना ऑर्डर नहीं दे सकते, जो लाइब्रेरी यूजर होते हैं, भाई तुमको इसको इसमें नहीं डालना है, इसमें डालना है, तो तरीका मतलब कहने का तरीका। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? What's the problem? हमारी लाइब्रेरी के बाहर में फुटकर क्या प्रॉब्लम? The people don't know the importance of cleaning sanitation. The people again. Don't understand the need of cleaning or sanitation. Do not understand. The need. और कुछ? Okay, what else? What else could be the problem? हम उनको बताएंगे
सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम मैनर्स नहीं है, मैनर्स Manners. और What other problem? discipline, lack of discipline, that's part of it. और Anything Bad else? habit. What? बैड हैबिट्स, Bad habits? again मैनर्स से लग जाता है। Sense of morality. Sense of morality. सबसे खास Morality. So I'm going to put those all together. Morality. What else? Maybe there's no garbage cans. हम लोग बोलते हैं ना कि रोड पे फेंके कहाँ, इसमें स्मॉल कैंटीन भी नहीं है, जैसे कैफेटेरिया वगैरह। so he's saying Not a cafeteria. So there should be a cafeteria, kind of but there's no cafeteria. Yes. No cafeteria. So they comes and then stay. any other point, कोई और Any point? other? प्रियंका कोई बोलो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको बोलो। बोलो जरूर। Maybe the library's opening too late. Yeah, Should open earlier. So problem is library hours. लाइब्रेरी लेट खुल रही है, लाइब्रेरी टाइम्स, श्रुति वाली लाइन लगी हुई है पहले से। कि जिससे लाइन पहले वो खड़े ना हो, लाइन नहीं, पहले कोई टाइमिंग्स का टाइमिंग्स रूल्स, टाइमिंग जो जिस टाइम पे है उस टाइम पे खुलनी चाहिए, वो उससे पहले ना हो। She is saying the same point. Same point, that is, it needs a library to time. Yeah, the time. Okay, so we have some good ways to define this problem. Depending on what we pick, we will solve it in a different way. तो हम हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं। अब हर प्रॉब्लम, हर जो भी हमने उसको बताया, डिफाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। So the step number 2 is to avoid blaming. स्टेप 2 था कि हम ब्लेम लोगों को ना करके खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। Okay, where are we blaming people here? Where? हम कहाँ पे इसमें लोगों को ब्लेम कर रहे हैं? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय? लाइब्रेरी लेट खुल रही है। मैनर्स पे, मैनर्स एंड बैड हैबिट्स। Here we're blaming these other people instead of taking responsibility, right? Even in the second point, I think. And oh yeah. First also. We will do it at the end. So this is typical when people try to solve problems. The first thing they tend to do when they're solving a problem is blame others. It's very normal behavior. जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यही हम करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं। Down here, you're starting to get into what we can do, that you're taking responsibility for this and not blaming others. पर जो नीचे के 3 पॉइंट्स हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर की कमियां ढूंढ रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि कैसे हम इन कमियों को सुधार दूर सकते कर हैं। सकते हैं। Yeah. So down here you might say, we need garbage cans, or we need a cafeteria, or we need to change library hours. तो जब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई तो हमने एकदम से क्या सोचा कि हमें गार्बेज कैंस चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व, हमें कैफेटेरिया बना देना चाहिए छोटे से, हमें लाइब्रेरी के आवर्स टाइम पे करने चाहिए क्योंकि बच्चे इतने बजे आ रहे हैं तो हमें इतने बजे से लाइब्रेरी करनी चाहिए। Yeah. So we need to move away from blaming, and we need to move as leaders into this area of solving problems. अगर हमें अच्छा लीडर बनना है तो हमें ब्लेम करने के बजाय रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेंगे कि हमें खुद इस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। When you think about this, we do this not only at work, but also sometimes at home, right? In our own houses. हम ये काम में ही ऐसे नहीं करते कि हम लोगों को ब्लेम करते हैं, हम घरों पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम
ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। And when you start to move from blaming others to this is when you become a leader. और जब आप ब्लेम करने के बजाय खुद हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तब आप एक अच्छे लीडर के राह पे चलते हैं। Okay? Good. Okay. We move into the next. So before we go into this innovation module more, we wanted to show you a couple different examples of innovation around the world. Okay. So for now, we just want you to watch these, but while you're watching, think about the problem that these videos are trying to address. जो अब आप वीडियोस देखोगे तो इसमें इनको देखते हुए आप ये सोचो कि इन वीडियोस के थ्रू कौन सी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। Watch me dance now. of an innovation is that it solves a problem. You're not doing something just to do it, you're doing it to solve a problem. तो जब भी एक इनोवेशन का मतलब है कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, जब इनकी कर दिया उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व। So
So what were the problems that these videos are trying to solve? तो जो भी आपने वीडियो देखी उन दो वीडियो में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, किस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, एक एक करके वो फॉलो नहीं करता है ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, वो वीडियो में जो म्यूजिक था इसकी वजह से सब लोग वहाँ पे रुक गए और जो रूल हमारा जो रूल है वो भी पूरा हो गया। Very good. So she's saying that in the first video they were not stopping, people were not stopping at the traffic lights. So but that was made so interesting that more people started stopping at the traffic lights. Absolutely. Yeah, great job. What about the second video? What problem was that trying to solve? Second video में कौन सी प्रॉब्लम थी? So she's saying most of the people use elevators instead of using stairs. So they made it so interesting. Yeah, great. And what were some common characteristics of both of those innovations in the videos? Yeah, music, absolutely. Anything else? तो शी ये बोल रही है कि दोनों वीडियो में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कॉमन क्या था सबसे ज़्यादा, किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ? Music, dancing, creativity, absolutely, and fun, right? Fun. So one thing that I love about these is that they didn't post a policy for the traffic light saying everyone must use a traffic light for your health or safety, right? Do you think people would have listened to that? तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या एक इनोवेटिव टेक्निक अपनाई, सिर्फ एक बैनर या पोस्टर पे लिख के ये नहीं कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, आप ये करो, इन्होंने कुछ फन फैक्ट उसमें एलिमेंट लाए ताकि लोग उसको फॉलो करें. Right, so instead of just posting policies, they made these fun and they made people want to change their attitudes and behaviors. तो थ्रू दिस फन एक्टिविटीज वो चाहते हैं कि लोग अपने आप में बदलाव लाएं. And one more thing that I just wanted to say about innovation before we go on is that it doesn't always have to cost a lot of money. As long as it's fun and it gets people to want to change their attitudes and makes life better for them, it's okay. It doesn't have to be very expensive. हर बार हमें बहुत पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी इनोवेटिव चीजों से भी बदलाव लेकर आ सकते हैं. Which goes back to the creativity, like this man said here. If you're creative, you can think of inexpensive ways to be innovative. तो अगर आप क्रिएटिव हो तो आप सस्ते आइडियाज जो आप जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाना पड़े, ऐसे आइडियाज भी सोच सकते हो जिससे हम बदलाव लेकर आ सकें. Okay, so now that you're thinking about being innovative, we're going to go back to our problem about people putting trash on the floor in front of the library. And we're going to define the problem as we need to encourage the readers to use the garbage cans. So हमें लोगों में क्या करना है कि लोगों को नीड बतानी है कि हमें गार्बेज कैन्स को यूज करना है. So we want you to design garbage cans that would be fun for the users to use. तो हमें ऐसे गार्बेज डस्टबिन्स को बनाना है जो लोगों को फन हो कि वो खुद आके उसमें रैपर्स डालें. So we're going to give you a piece of paper for each team, and each team is going to design what they think is a great way to get people to use a garbage can. तो हर एक टीम को मैं एक पेपर दे रही हूँ, वो एक एक गार्बेज कैन बनाएंगे कुछ अपनी क्रिएटिविटी से, मार्कर आपकी टेबल पे है. And we want you to draw, not write, draw. लिखना नहीं है, गार्बेज कैन को ड्रॉ करना है, बट इन अ डिफरेंट वे जो कि लोग खुद से अट्रैक्ट हों और आप उसमें अपना पूरा डालें.
दबाएंगे तो ये म्यूजिक की आवाज़ निकलेगी, इसका मुंह खुलेगा और जो बच्चे या बूढ़े जो भी कचरा डालेंगे इसके अंदर डाल देंगे। बात नहीं है, थैंक यू फॉर इट। Oh wow. इसके बाद में Very nice. So what you have done with dustbin is a sound of dustbin. When the person will like do the button, it will say hello, and the mouth will open. They will put the buttons inside, and when they like move their feet, then it will say thank you. Oh, I love it. Very good. Very good. हमने जो डस्टबिन बनाया है उसका नाम है यू एंड टेक। अगर इसमें कोई भी कचरा डालेगा तो उसको एक टोपी मिलेगी। Oh, so nice. टॉफी मिलेगी? So what they did और is जैसे ये बटन है, प्रेस बटन है, जैसे ये दबाएगा तो इससे आवाज निकलेगी यूज मी यूज मी। So if when somebody wants to do something, they will press the button. The mouth will open, and the dustbin will say use me, and then they will get a trophy also. एवरी टाइम वेलकम वेलकम करता रहता है म्यूजिक के साथ। बच्चे इसको देखने आएंगे तो वो देखेंगे कि क्या है, फिर वो नीचे देखते हैं कि कोट है ये नीचे, वो यहाँ से इसका बटन प्रेस करेंगे तो ये छलांग लगाएगा, एवरेज नीचे जाएगा तभी छलांग लगाएगा। So this is a kind of round box, and what did it say? वेलकम वेलकम। So it keeps on saying welcome, 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 and when somebody wants to throw, this will like turn like this, and then they can throw something like that. Oh, wow. और इसमें जब हम डस्टबिन कुछ में डालेंगे तो यहाँ से कैंडी पॉप होके निकलेगी और यहाँ पे म्यूजिक और लाइट जलेगी, रेड कलर की लाइट, और म्यूजिक बजेगा कि थैंक यू। अच्छा, dustbin कैंडी पॉप। So the dustbin name is candy popper, and when somebody will throw it, the music will play, and you will get candy also. Candy also, and it's a song will say Thank you. Oh, that's great. This is a very creative and innovative group. I didn't know that about you. Very good. So we're going to talk now a little bit more about innovation, and while Rebecca's talking, I'm going to hang up your posters on the wall. So I'm going to take them from you. Okay, great. So now that you've all been very innovative at your tables, I want to talk a little bit about the characteristics of innovation. So when you think of innovation, one very important thing to keep in mind is that it's always all about the users. You need to respond to your users' needs. So you don't just get a new technology or a new program because it's cool, you get it to serve a purpose. तो आप जब भी कोई नई इनोवेटिव टेक्निक के बारे में सोचो, कोई भी प्रोग्राम लाने के लिए सोचो, तब ये सोचो कि वो किसके लिए है, यूजर्स के लिए है। क्या वो मेरे यूजर्स को बेनिफिट पहुंचाएगा? सिर्फ उस प्रोग्राम को लाने के लिए मत लाओ। क्या वो मेरी सेंटर पे जो लोग आते हैं उनको उससे कुछ बेनिफिट होगा, वो सोचो। Many of you are from different read centers, so your users probably look differently. There's not one innovation that would work for all of you. You need to adapt it to your user group. ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने अपने सेंटर के लिए प्लान किया तो वो सारे सेंटर पे चले जाएगा, क्योंकि लोग हर जगह डिफरेंट है, लोगों की नीड हर जगह डिफरेंट है, तो हर सेंटर के अकॉर्डिंग उनका कोई प्रोग्राम होगा। And like we talked about earlier, innovations solve a problem. It's a good way, a fun way to solve a problem at your library. इनोवेशन से ही हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि कोई एक नई सोच के साथ। And good innovations do not always require funding. We hear this a lot, that people want to do something innovative, but they say, oh, we just don't have the funding. That's not true. You can do innovative things without a lot of money. So, ज़्यादातर क्या होता है जब किसी को बोलो कि आप इनोवेटिव टेक्निक को अपनाओ, कुछ नया करो, तो वो सब ऐसे कहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है करने के लिए। इनोवेटिव चीज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पैसे चाहिए। अगर आप थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ा माइंड यूज़ करो तो आप कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हो जहाँ इतनी फंड की रिक्वायरमेंट ना हो। And even with the trash cans, so a lot of you have, or you all have fantastic ideas for the trash cans. And even if you didn't have money, maybe you could decorate the trash can with a face or it said Phoebe. It would be very inexpensive, but still innovative.
अब जैसे ट्रैश कैन की बात करें, आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो। एंड देन अगर म्यूजिक पे डालना है तो छोटी बैटरी सिस्टम आती है जो टॉय में लगी होती है, वो कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। सो यू जस्ट हैव टू थिंक दैट वे। And most innovations involve some risk taking. You're probably not going to get it right on the first try, and that's okay. हम इनोवेटिव जब सोचते हैं तो हम नई चीज़ों के लिए प्लान करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्लान हर बार जो है सक्सेसफुल हो जाए। अगर हम फेल भी करते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। You need to embrace failure and learn from it and try something new the next time. आप जो भी अगर आपका कोई प्लान फेल हो गया है तो उससे होप छोड़ने के बजाय ये सीखो कि हम कहाँ कमी रह गई, एंड देन ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम। And lastly, great innovations are sustainable. So you think about the long term in your community when you have an innovation. तो जब भी आप कोई नई टेक्निक, नई प्रोग्राम के बारे में सोचो अपनी कम्युनिटी के लिए, तो एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से सोचो कि आगे जाकर मतलब कितना फायदा होगा इसका। So we're going to talk about 3 trends that you see in innovative public libraries or community libraries. So these are from around the world, and these trends you see in all very innovative libraries. हम 3 ट्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे जो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरीज में आजकल यूज हो रहे हैं। And when we're talking about innovation, there's 4 areas that we're looking at. The first one is users, who's using the library. The second is space. How does the library look when you walk in? Resources, what's in the library? And finally, programs. What kind of programs are you offering? जब हम इनोवेशन एरिया की बात कर रहे हैं तो हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे? यूजर्स, कौन लाइब्रेरी यूज कर रहा है? स्पेस, हमारी जो लाइब्रेरी है वो कैसी दिखती है? और रिसोर्सेज, हमारी लाइब्रेरी में क्या क्या सामान है? और प्रोग्राम्स, कि हमारी लाइब्रेरी में किस तरह के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज हैं। So let's start by looking into the past about libraries the way they used to be, and old libraries. This is a library from about 30, 40, 50 years ago. तो ये जो लाइब्रेरी का फोटोग्राफ देख रहे हो, ये 30-40 साल पहले एक लाइब्रेरी की फोटोग्राफ है। तो लाइब्रेरी कैसे दिखती थी? What do you see in this picture? What's happening? क्या दिख रहा है आपको इस फोटोग्राफ में? क्या हो रहा है? बताओ। डिसिप्लिन। Discipline. ओके। और क्या आप लोग? Search for the book. Issuing of the book. और आप क्या देख रहे हो? The what? पढ़ाते हुए बुक्स। Reading. What else is going on in this library except for reading? Where is the librarian? Discuss about submit. Discuss. The desk, yeah, the desk. Or do you see comfortable chairs in the library? क्या चेयर्स कंफर्टेबल है जो लाइब्रेरी में दिख रही हैं? क्या आपको लगता है कि वो कंफर्टेबल है? No. No. So in the past, libraries were only about the books and just giving the books to the users, right? The users came in, found their books, and left. तो That's a picture. पहले क्या होता था? लाइब्रेरी को क्या सोचा जाता था? सिर्फ वो बुक्स के लिए है, बुक्स पढ़ने आओ या घर के लिए लेके जाओ या अपने बैठ के पढ़ो, just that. Okay, so let's look again at something. This is the international symbol for libraries. What does this symbol say about libraries? ये एक इंटरनेशनल सिंबल है लाइब्रेरी का। क्या इस सिंबल से आप क्या समझ पा रहे हो? क्या कह रहा है? इससे ये मैम वो नीचे आराम से बैठ करके आराम से पढ़ रहा है। So he's saying So this says that libraries are about books and reading, right? But libraries are really about much more, and that's what we're going to talk about. तो ये सिंबल बता रहा है कि लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स के लिए है, लेकिन
लाइब्रेरीज का एरिया सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। Okay, so the 3 trends we're going to talk about are services for everyone, a technology hub in a digital world, and friendly spaces, collections, policies, and librarians. So हम 3 ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, और वो ये है सर्विसेज फॉर एवरीवन, सबके लिए सर्विस हो, अ टेक्नोलॉजी हब इन अ डिजिटल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी हो वहाँ पे क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, एंड फ्रेंडली स्पेसेस, स्पेस हमारी लाइब्रेरी में कैसे हमने स्पेस को मेंटेन कर रखा है, हमारी बुक की कलेक्शन, हमारी पॉलिसीज और हमारे लाइब्रेरियन के बारे में। So I want to point out that you see that collections or books are 3 in here and only 1 item in number 3. You're not the most important part of libraries. तो जैसे आपने पहले देखा कि सिर्फ लाइब्रेरी को बुक्स के लिए कुछ सालों पहले सिर्फ बुक्स के लिए देखा जाता था, अब बुक्स जो है वो सिर्फ एक 3rd कॉलम में एक वर्ड आ रहा है, कलेक्शंस, उसी का पार्ट है। तो लाइब्रेरी और भी बहुत ज़्यादा है, बुक्स तक सीमित नहीं है। Okay, let's talk about services for everyone. So we're going to start with Read Nepal, but when you do the training, I want this picture to be Read India. तो अब जो हम बात करेंगे वो सर्विसेज, लोगों के लिए, सबके लिए सर्विसेज। ये पिक्चर जो है वो रीड नेपाल की है, पर जब आप आगे जाकर ट्रेनिंग करोगे तो वो चाहते हैं जो यहाँ पिक्चर लगे वो हम में से किसी एक सेंटर की हो। So why is this interesting picture? Because the farmers needed information for their animals. They came to the library. The library didn't have the materials they needed, so the library brought the veterinarian to the library to help answer questions about the animals. So, ये पिक्चर क्यों इंटरेस्टिंग है? ये पिक्चर इसलिए इंटरेस्टिंग है, लोगों को एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और उनके पास ज़्यादा बुक्स नहीं थी, मटेरियल नहीं था, तो लाइब्रेरियन ने क्या किया, वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया, एनिमल्स के डॉक्टर को बुलाया, और वहाँ पे उनको एनिमल के साथ ही समझाया जो भी उनके उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। So the librarian understands that it's important to have services that even help animals because that's important to the users in the community. तो फिर उससे लाइब्रेरियन को ये भी पता चला कि उनको ऐसी इंफॉर्मेशन भी उनकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए एनिमल से रिलेटेड, क्योंकि कम्युनिटी की नीड निकल के आई। Okay, this picture is in Myanmar, and in Myanmar, the librarian, the community librarian, had noticed that there were many children who were in the streets that were not going to school because their parents wanted them to find plastic bottles for money. तो ये पिक्चर म्यांमार कंट्री की है, वहाँ पे इन्होंने क्या नोटिस किया कि बहुत सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनको नहीं पढ़ना, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो लास्ट टाइम Plastic bottles. या जो और वो क्यों स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि उनको प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी करनी होती। So the librarian decided to bring the library outside onto the street and to sit there, and when the children were walking by, they could sit for 10 or 15 minutes and play with tablets or look at some materials. तो लाइब्रेरियन ने क्या सोचा कि ये नहीं आ सकते तो हम इनके पास जा सकते हैं, और उन्होंने बोला कि हम 15 मिनट्स के लिए टैबलेट्स वगैरह लेके जाएंगे लोकल लाइब्रेरी वहाँ पे, और उनको टैबलेट्स के थ्रू वहाँ पढ़ाएंगे। In many countries now, you may have heard that there's refugees coming to their countries from other places, and so here are libraries that are providing services to those refugees by offering them classes in local languages, how to become a citizen of the country. तो बहुत सारी कंट्रीज में क्या हो रहा है कि दूसरे देश से लोग उनके वहाँ पे आ रहे हैं, रेफ्यूजी जो होते हैं, ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि हम रिफ्यूजीज के लिए क्या कर पाए अपनी लाइब्रेरी पे। उन्होंने क्या किया, उनके लिए इंफॉर्मेशन, बुक्स, उनके लिए वहाँ पे सर्विस, और उनको बताया कि इस कंट्री में हम कैसे क्या काम करना है, कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी लाइब्रेरी पे दी। So when you're thinking about services, it's important to think about who's not coming to your library. Which populations are you not serving, and how can you be innovative and bring them to the library? तो जब आप सर्विस की बात कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है समझना
कि सबसे पहले जानना कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है आपकी कम्युनिटी की जो आपके सेंटर पे नहीं आ रही है, बच्चे, बूढ़े या जो भी, ठीक है, और फिर उनको लाने के लिए एक नया इनोवेटिव तरीका। Okay, so the next trend is technology hubs in a digital world. जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वो है टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स। And this is in Namibia, in Africa. They have the technology for the children. The children come after school and are able to use the computers. So ये एक टेक्नोलॉजी हब है, लाइक हमारा कंप्यूटर लिटरेसी रूम होता है, ये इनका कंप्यूटर सेक्शन है जहाँ पे बच्चे स्कूल के बाद आके कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं। So some people this morning were talking about reading. So one of the ways you get children or youth into the library are with computers, and then they actually have to read what's on the screen. So आप सब सुबह बात कर रहे थे कि रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें, तो उसका एक यूनिक तरीका है कि आप बच्चों को कंप्यूटर पे रीड करने को बोलो। कंप्यूटर में बुक्स भी होती हैं, उनको उस पर रीड करने को बोलो। कंप्यूटर्स के थ्रू आप बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हो, रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हो। This is in Romania, and they wanted to bring more teenagers into the library, and the way they did that was by getting a camera and a microphone and having the children, the teenagers, create YouTube videos. So ये हमारे एक जगह है, वहाँ की लाइब्रेरी की फोटोग्राफ है। इन लोगों को बच्चों को लाना था अपने सेंटर पे, पर वो नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि कैमरा दे दिया और उनको एक रिकॉर्डर दे दिया और उनको क्या बोला कि आप वीडियोस बनाओ, और वो वीडियोस कहाँ पे जाएंगी? यूट्यूब पे। This is in the Philippines, and they noticed that the old people in the community wanted to be in touch with their children, many of whom had left the Philippines and were in the United States. So at the library, they taught them how to Skype so that they could talk to their families in other countries. So ये एक फिलीपींस की लाइब्रेरी है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो लोगों को अपने लोगों से बात करनी थी जो बाहर रहते हैं, लाइक यूएस और जहाँ भी रहते हैं, तो उन्होंने उनको स्काइप एक तरीका होता है कंप्यूटर पे किसी से बात करने का, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इन्होंने उन लोगों को अपने लोगों से बात करने सिखाया और आप उनको बोला लाइब्रेरी पे आके रोज ऐसे बात कर सकते हो। And the third trend is we talk about friendly, and the first one is friendly spaces. सबसे पहले हम फ्रेंडली स्पेसेस की बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइब्रेरी में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जगह बना सकते हैं हर एक के लिए। A lot of people think that you need money to create different spaces in your library, but you can see from this picture, this did not cost very much money. They created a children's corner that was very fun for the children. तो ज़्यादा सबको लगता है कि स्पेस क्रिएट करने के लिए लोगों के लिए हमें बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जगह ज़्यादा चाहिए होगी, पर आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि स्पेस कितनी कम है, पर इन्होंने डिफरेंट कॉर्नर्स बना दिए हैं, एक कॉर्नर बच्चों का, एक पढ़ने का, एक किसी चीज़ का। Finally, we talk about books and collections. So in this picture, you can see that there's different types of books. They're not all just very serious. Some of them can be fun, they can be comics, they can be e-books, and they should be displayed in a way that people want to take them and look at them. So अब हम फाइनली बुक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि बुक्स में हमारे पास कलेक्शन कैसी है, ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिर्फ बहुत सीरियस बुक हो, कुछ फन बुक्स, कॉमिक बुक्स, ग्राफिक बुक्स, ठीक है, और हम टैबलेट्स पे भी उनको ई बुक्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के थ्रू पढ़ने का मौका दे सकते हैं। एंड ये बहुत ज़रूरी है कैसे हम उनको डिस्प्ले कर रहे हैं। Okay, friendly policies. Now, in libraries, typically the stereotype of the librarian is they're always telling everybody to be quiet. तो अब हमारी लाइब्रेरी की पॉलिसी ज़्यादातर क्या होता है, बस हम बच्चों को लाइब्रेरी में क्या बोलते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। How many of you in your read centers have a sign that says no talking or says quiet? कितने यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से उनकी लाइब्रेरीज में किन की लाइब्रेरीज में साइन है कीप क्वाइट का?
Anybody? हाँ लिखा साइन कुछ भी है, हाथ खड़ा करो, You have something? Just लिखा होगी keep quiet. So one of the things to think about is to create different spaces in your library. One that may be quiet, but one where they can talk and they can play and they can be interactive. तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइब्रेरी में स्पेस क्रिएट कर दो। एक कॉर्नर आप कर सकते हो जहाँ पे सिर्फ लोग पढ़ रहे हैं, एक कॉर्नर आप ऐसा बना सकते हो कि जहाँ पे आप बच्चों को बोलो कि लाइक दे कैन डू एनीथिंग दे वांट, दे कैन चिट चैट और व्हाटएवर, और ऐसे आपको डिफरेंट स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। So you can see in this picture the children are on the floor drawing, and then the picture below that the mothers are having a party at the library. इस ऊपर वाली पिक्चर में ड्राइंग बना रहे हैं सब मिलके, नीचे वाली पिक्चर में मदर्स पार्टी कर रही हैं। And finally, friendly librarians. So now this means that the librarians are working with the people and being very open, and people want to come and talk with them. इस पिक्चर में ये नहीं कि लाइब्रेरियन अपनी सीट पे बैठा है, लाइब्रेरियन जगह बार-बार जाके लोगों से बात कर रहा है, उनसे पूछ रहा है, उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। Okay, does anybody have any questions about these trends? किसी के पास कोई क्वेश्चन? No. Okay. So now we want you to do another exercise. We want you at your tables to think of innovation in your libraries here in India. What are the things you're seeing in your libraries here in India? Sorry. हमारे सर्विसेज फॉर एवरीवन, उसका कोई एग्जांपल आप जब लाइब्रेरी करेंगे? But that happens here in India. Farmers. Working with farmers. Excellent. Very good. Health workshops. Okay, very good. What about this table? Ideas? आपकी I was out. I don't know what was happening. नहीं, Yeah, सर्विस but इज फॉर they- एवरीवन। बताओ, सर्विस फॉर एवरीवन के लिए क्या कहते हैं? आपके यहाँ पे क्या सर्विस करते हैं सबके लिए? CSC, CSP, कॉमन सर्विस सेंटर, पेंशनरी पे। Common service. Oh, pension. Oh, excellent. Very good. टिकट बुक करवाना। Okay. At this table, did you already give an example? वो हेल्थ कैंप होता है। इसके अलावा Health camps. Okay, good. Let's do number two. Digital technology being technology hubs. सर्विस सेकंड को पे टेक्नोलॉजी हमने Kindles. Okay. Tablets. Wikipedia. Very good. What else? What other digital technology? डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेडियो स्टूडियोज, Studio. Wow. Very good. प्रोग्राम रेडियो कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम। Radio. Okay. Excellent. And the last one, friendly services, friendly spaces, friendly librarians. Storytelling. Oh, the grandparents. So that's great. That's great. फेस्टिवल Celebrating festivals. Celebrating festivals. Very good. Educational movies. Oh, great idea. Celebrate national and international day in our country. We celebrate national and international Oh, Yeah, you wonderful. had it. Celebration. Yes. These are all actually great innovations. And the thing that I think you have to understand is that you are very innovative here in India. And you have to keep being innovative here in India. मुझे काफ़ी अच्छा लगा हमारे इनोवेशंस जानते हैं, हम लोग ये चीज़ें करते हैं और ये चीज़ें हमें आगे तक इंडिया में अपनी लाइब्रेरीज में करते हैं। But you also have to tell others about what you're doing. So I will tell, when I go back, I will be talking to librarians about some of your innovations, but you also have to find ways to talk about what you're doing here and how innovative it is. हमें ये जो इनोवेशंस है, जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमें ये आगे जाके और के साथ शेयर करने हैं और जब मैम वापस अपने जब घर जाएंगे वहाँ जाके जो हमारे इनोवेशंस इतने अच्छे लगे जो हम लोग करते हैं ये वहाँ जाके शेयर करें। And I want you to think as trainers how you could change this PowerPoint slide that I just did about trends so that it reflects more of what's happening in India. जो हमारे पावरपॉइंट में जो स्लाइड्स हैं हम लोग जितने उन्होंने बताया ये सबको ये सब क्लियर है ताकि आगे जाकर हम सेंटर्स में ये एक्टिविटीज़ करा। Because when you're training, it's important for you to talk about your own country, not necessarily to talk about the other countries, right? अपनी
कंट्री कुछ के बारे में जानते हैं, यहाँ पे क्या ट्रेंड है, कैसे लोग हैं, ये विजिट कर सकते हैं। Okay, so now you're moving on to Rebecca. Okay, so we've talked a lot about innovations in your organization and in your country, but now we want you to look inward and think of yourself as an individual innovator. तो अभी तक हम इनोवेशन के बारे में बात कर रहे थे, पर अब कंट्री के बारे में। बट अब हम इनोवेशन के बारे में बात करेंगे कि हम में उसके क्या। So we've got a few characteristics of innovators here that I'm going to go through very quickly. तो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। So the first characteristic is being empathetic. You're thinking about what your users need. So an example of this is maybe realizing that you need more comfortable chairs in your library so your users can feel more comfortable there. So सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है empathetic. So empathy को फील करना कि अगर आपको लग रहा है कि chairs are more required, तो आपको देखना है कि whether they are required or not, but users की need के according. The second one is problem solvers, and we've already talked about this a lot already, but you're always asking questions. And another example of problem solvers is noticing if you're getting a question about something a lot from users in the library, you adapt and you find ways to better serve them. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप यूजर्स से क्वेश्चंस पूछ रहे हो या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। And risk takers, you've already heard this from us, right? You're not afraid to fail. रिस्क लेने के लिए आप हमेशा रेडी हो, और ये नहीं कि ये करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, अगर ये ऑप्शन हम लेंगे तो फेल हो जाएंगे, और आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। The fourth one is networks, and this is about having relationships with your colleagues, but also with people from outside of libraries and Read Global. So how many of you have partnerships or good relationship with other organizations in your communities? So ये बोल रहे हैं कि नेटवर्क्स क्या होते हैं कि ठीक है, रीड इंडिया है, रीड ग्लोबल है और आपकी कम्युनिटी है, पर इसके अलावा आप और किन ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हो या इनके साथ काम किया है? ऐसा होगा जैसे 12, आप बता सकते हो 12 टीम से कौन से आप ऐसे और पार्टनर्स हैं जिनके साथ आपका नेटवर्क हो या बात किया हो, काम कर रहे हो जिनके साथ? दूसरा सब परियोजना DF. So they are also working with Digital Environment Foundation, and their work is they're working with a local NGO. दूसरा दशक. Fantastic. So that is very innovative of you. I think a lot of times as librarians and library workers, we kind of stay in our little sphere of libraries, but going out into the community and partnering with other organizations is a great way to discover new innovations. Shesa also we have example, Magic Bus. Magic Bus पहले अभी डेवलपमेंट अल्टरनेटिव था। DA Development Organization is one organization through which they conducted a literacy program for the like 55 or 60 days, 45 days literacy program for the illiterate women, and Magic Bus a sports for development program for the youth. Well, these are all great examples that you could use in the PowerPoint that Susan was talking about too. Really fantastic examples of innovations. तो जब आप ट्रेनिंग करोगे आप इसमें एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि क्या नेटवर्किंग का क्या मतलब है? Yeah, really great. And I think we could learn a lot from this too in our library. So I'll share some of these examples back home. So the fifth example is observant. This kind of goes along with problem solving. So you're observing what's happening and you're always thinking about what's working and what's not working. तो टाइम टू टाइम मतलब जब भी आप ऑब्जर्व करते रहें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारा एक एज अ लाइब्रेरियन या एज अ कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है. And creators. So it's really great to have an idea, but you actually have to make it happen. And this to me goes along with risk taking a lot. You can't be afraid to fail. You have to try your ideas out. तो क्रिएट करना, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, चाहे रिस्क लेना पड़े तब भी उनको इम्प्लीमेंट करना. And the last one is reflective. So after you try an idea out, you sit back and you think about what worked and what didn't work. And a lot of this has to do with talking to your users in your community. तो जब आपने किसी आइडिया को ट्राई किया, उसके बाद क्या चीज़ काम आई, क्या चीज़ नहीं आई, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म. So now that we've gone through some of these characteristics, you all are going to do another assessment to assess yourself on how innovative you think you are. तो हम
छोटा सा टेस्ट होगा कि आपका अपने ऊपर। So you're going to open to your workbooks, the How Innovation in Depth Are You assessment. अपना वर्कबुक में ये वाला पेपर खोलिए, How Innovation Adapt Are You. So it's on page 9. Page 9. And what you're going to do is you're going to rate yourself on a scale of 1 to 10 for each statement. So you'll rate yourself a 10 if you agree very strongly with it, a 1 if you don't really agree, or you can also rate yourself somewhere in the middle. Sorry, I'll give it back to you. तो आप अपने आप को रेट करोगे 1 to 10 के स्केल पे। अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं स्ट्रांगली अग्री करती हूँ इस बात से, ये बात एकदम ठीक है, तो 10 पॉइंट दोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं करती तो 1 या 2, ठीक है। और बीच में भी कर सकते हो कि मैं 7, 8, 6 जो भी है, जिस लेवल पे आप देखना चाहते हो। अब पहला पॉइंट है आई अंडरस्टैंड व्हाट माय कलीग्स एंड लाइब्रेरी यूजर्स नीड। मेरे जो साथ में काम करने वाले लोग हैं और जो मेरी लाइब्रेरी पे आने वाले लोग हैं, मैं उनकी नीड को समझती हूँ। आपको लगता है आप समझते हो? अग्री? You just have to give yourself points. And at the end, you'll add all of the numbers up, and that will be your total. और लास्ट में अपने नंबर को जितना भी आप रेट करोगे उसको टोटल कर देना। And then we'll discuss. Next, I look out for problems in my library and work to find solution. मैं अपनी लाइब्रेरी में प्रॉब्लम्स क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स है टाइम टू टाइम वो देखती रहती हूँ और उनका सॉल्यूशन भी ढूंढती है, ठीक है। I take risk and try new things even though might fail. मैं रिस्क मैं नई चीज़ों को ट्राई करती हूँ, मैं फेल होती हूँ, तब भी मैं चाहे मैं फेल हूँ तब भी मैं नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ। नेक्स्ट, I share and discuss ideas with my colleagues and community. मैं जो भी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ वो मैं अपने दूसरे स्टाफ के लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ और अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करती हूँ। I notice when something is not working well in my library. मैं इस बात पे ध्यान देती हूँ कि मैं हमेशा ये चीज़ नोटिस करती रहूँ जो चीज़ हमारी लाइब्रेरी में वर्कआउट नहीं हो रही है, ठीक है, या जो चीज़ को मुझे हटाना है या जो चीज़ को मेरे को लाना है, मैं इन सब चीज़ों का ध्यान देती हूँ। I put my ideas into action. ये नहीं कि मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट भी लागू भी करती हूँ। I keep trying even my ideas fails. मैं ट्राई करती रहती हूँ चाहे मैं फेल क्यों ना हो जाऊँ। I reflect on what worked and what didn't work with new initiatives. अगर मैं फेल होती हूँ या कोई भी आइडिया इम्प्लीमेंट करती हूँ तो मैं ये देखती रहती हूँ कि क्या चीज़ हुआ सही से और क्या चीज़ नहीं हुई। I find inventive ways to use the resources my library already has. मैं जो मेरे लाइब्रेरी पे रिसोर्सेज हैं कैसे उनका और अच्छे से यूज करना है ये भी सोचती हूँ। मैं ऐसे नए तरीके जो मेरी कम्युनिटी को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें वो भी सोचती हूँ। I use feedback from others to improve my work. मैं टाइम टू टाइम लोगों को बोलती हूँ कि मुझे फीडबैक दो ताकि मैं अपनी लाइब्रेरी की सर्विसेज को बेटर कर पाऊँ। मैं अपनी सोच को दूसरों के सामने रख पाती हूँ और अपने आइडियाज दूसरों तक रखती हूँ। मैं जब भी कुछ इम्प्लीमेंट करती हूँ और या जब भी कोई सॉल्यूशन देखती हूँ उसको बहुत सारे पॉइंट से देखती हूँ कि इससे ये होगा, इससे ये नहीं होगा, तो ये सब मैं इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ। I know my organization visions and work to advance it. मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का विजन पता है कि हमें क्या हमारा लक्ष्य है, ये हमें पता है और उसको अचीव करने के लिए मैं काम करती हूँ। I regularly collaborate with others. मैं और दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करती हूँ। So I'll give you about another minute or so to complete this, and you'll want to add up the total. 1 मिनट है बस आपके पास। I know, we do have the same problem. कंप्लीटेड हो गया?
does everybody have their total number of points? So I want you to raise your hand if you scored between 120 and 150 points. Raise your hand. 120 से 150 के बीच जिसके पॉइंट से हाथ खड़ा करें. We've got one here, 2, 3. Great. So if you scored yourself between 120 and 150, congratulations, you are very innovative already. What about 90 to 119? Okay, so we've got a lot of people in the middle. So this means you're on your way to becoming an innovator, but you can still use some practice, which we all could. And what about below 90? Anyone? That's okay. One thing I will say about this is when you rate yourself, it's not always accurate. So I think a lot of you who rated yourself lower are probably actually a lot higher, but you just might not realize it. So another reason why we have extra assessments in the back is so you can give these to your colleagues or friends and have them rate you. And I think most of you will find that you're a lot higher than you think you are. So कई बार हम अपने आप को लो रेटिंग देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे में हम ये सब नहीं करते, पर हम एक मिडिल लेवल पे होते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा पेजेस हैं, आप अपने कलीग्स को बोल सकते हो आपको रेट करने के लिए, ठीक है? Okay. So after the break, we are going to have you all make balloon towers. And this is going to test your innovation. So you just rated yourself, but we want to see if it's true what you actually said. तो अभी आप लोगों ने अपने आप को रेट किया है, तो अब एक एक्टिविटी होगी जिसमें आपको बलून टावर क्रिएट करना होगा और हम देखेंगे कि आपने आपको सही रेट किया है या नहीं. So what you'll do is each team will get a pack of balloons and some tape, and you will have to create the tallest freestanding balloon tower that you can. आप लोगों को एक टावर बनाना है, ठीक है? टेप और बलून्स आपको दिया जाएगा. And you cannot have it leaning on anything, and you can't tape it to the ground. आप उसको ग्राउंड से नहीं चिपका सकते, ठीक है? आप उसको नीचे कोई रेस्ट नहीं होना चाहिए, बस आप ऐसा होना चाहिए कि आपने टावर बना दिया, आप उसको रखो और वो खड़ा हो. And I didn't think I'd ever have to say this, but you also can't tape it to the ceiling. और आप उसको ऊपर भी ये देखिए ऊपर से टेप लगा दिया और फिर वो तो खड़ा हो ही जाएगा, वो भी नहीं कर सकते. ऐसा क्रिएट करना है कि नीचे कोई बेस नहीं, ऊपर कुछ नहीं, बट स्टिल वो खड़ा हो जाए. Are there any questions about the balloon towers? कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा? So we've got a few minutes until break. Before break, I want you to talk with your teams and create a strategy for your towers. कैसे टावर बनाना है उसकी एक सेकेंड. They're already started. Okay, so you've got a few minutes to create a strategy, and then we'll go to break. When we come back. क्या चीज नोटिस करी जो डिफिकल्ट थी, इजी थी? It was fun, Ravi. Fun. It's fun. Yeah, and teamwork. Teamwork. Teamwork and fun. Patience रखना चाहिए. Patience. Patience, yeah, you have to be thinking and engineering. Concentration. So,
Maybe something else? Planning. Planning, yeah, planning is so important. So when we're thinking about innovation, the fun is also important, to be thinking about something fun in your mind. And we want you now to move to another activity where you are actually going to be developing an innovative idea for something you're going to do in your read center. And we want you on page 10 of your books, you're going to be describing an innovative idea. तो आप लोगों को एक ऐसा आइडिया जो आप अपने सेंटेंस पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो सोचना है। ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई एनीथिंग जो आप अपने सेंटेंस में लागू करना चाहते हो, कुछ ऐसा आइडिया सोचना। So this is something that you're doing individually. You're only doing it for yourself. I want you to come up with one innovative idea and tell us, first of all, who's going to benefit from this idea? Which user group will benefit? So आप जो भी ये अलग-अलग करोगे, इंडिविजुअल ग्रुप में नहीं करोगे, अपनी अपनी वर्कबुक में करोगे, और ये आइडिया में सबसे जो भी आपका आइडिया है आपको सबसे पहले बताना है कि who is this for? तो ये आइडिया किसको बेनिफिट करेगा, किसके लिए होगा ये, ठीक है? Then you're going to describe your innovative idea. You're going to write a little bit about your innovative idea. और फिर उसके बारे में लिखोगे. And then one of us is going to come around and you're going to tell us your innovative idea and we're going to improve it. और हम में से कोई आपके पास आएगा और आपका आइडिया देखेगा और उसको अप्रूव करेगा और बताएगा. When you come back tomorrow, we're going to take these ideas and we're actually going to turn them into an action plan. So we're going to be working more in detail with these ideas. जब हम लोग कल आएंगे तो हमारे जितने भी हमारे आज के आइडियाज हैं उन सबको कलेक्ट करके एक एक्शन प्लान बनाएंगे. So how's everybody feeling? Are you tired? You okay? Want to sing? Normal. Is that good after training to just be normal? ट्रेनिंग के बाद अच्छा They want to sing. They what? They want to sing a song. They want to sing a song? Later, we'll sing a song later. We're really closing on at the end of the first day of training, and I hope that you have found this to be very interesting and that you have learned some good lessons. हम आज का सेशन बहुत बस अब क्लोज करने ही वाले हैं. I hope कि आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ट्रेनिंग पसंद आई होगी. Yes. Good. And tomorrow we're doing action plans and communication. So again, we'll be very interactive, very busy. You'll be doing lots of activities with us. कल हम एक्शन प्लान्स पे बात करेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे ऐसे जैसे आज. Okay, so now you have one thing to finish up in your leadership profile. Module 2, you're going to finish just write what you've learned about Module 2, what innovative qualities you have. Page number कितना? Page number 2 पे आपको फर्स्ट मॉड्यूल 2 पेज नंबर 2 मॉड्यूल 2 का no actually it's just page number 2 वर्कबुक या सेकंड ठीक है. वहाँ पे मॉड्यूल 2 की आपको प्लीज three lines. No. This was 3 lines, no? page 2 and just Module 2. मॉड्यूल 2 में आपने क्या सीखा, कौन सी 4 lines है ना? नो मॉड्यूल 2 लाइब्रेरी लीडर्स इनोवेटर्स 4 लाइंस का है. डिड यू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मॉड्यूल, यस और नो, हाँ या ना. व्हाट इनोवेटिव क्वालिटीज डू यू, आपके अंदर कौन कौन सी इनोवेटिव क्वालिटीज है ये देखिए, ठीक है. And then the horses are going to give a recap. और मॉड्यूल 2 का हमने क्या सीखा, हॉर्सेस जो है वो एक छोटी सी समरी दे. हमने इसमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जानेंगे कि हम अपने सेंटर पर क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं. इसलिए हमें पता लगा कि हम कुछ
नया करके कुछ चेंज करके क्रिएटिव और चीप आइडियाज के द्वारा भी अपनी लाइब्रेरी में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। इसमें 3 ग्लोबल ट्रेंड्स बताए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो सर्विस फॉर एवरीवन, जिसमें लाइब्रेरी में हर कोई आए और जिसके लिए हमारी लाइब्रेरी अवेलेबल है। और इनोवेशन से अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं क्रिएटिविटी के द्वारा। हमने दूसरे से ये भी सीखा कि हम टीम वर्क करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। ये सीखा कंप्यूटर से बच्चों I think we cover all the points, the trends, and the existing skills in order to bring change to the library, understand the needs of the community, and teamwork. Congratulations. So we are finished for today, and we will see you again tomorrow at 10 o'clock.